Hello friends. So in our previous video, we have seen about chemical bonds, and in this video, we are going to talk about the physical bonds. So let us see which are the different kinds of physical bonds which are present. So what are we going to talk about is the intermolecular forces of attraction, IMFOA, intermolecular forces of attraction, and they are of which types? Here you can see polar and non-polar. They are of two types, polar and non-polar. Then talking about polar interaction, we are having dipole-dipole, dipole-induced dipole, and ion-dipole. Let's quickly dive in deep into dipole-dipole, dipole-induced dipole, and then we'll go for ion-dipole. And talking about non-polar, we are having London forces, also called as dispersion forces. Okay, now talking about dipole-dipole interaction, how is the dipole-dipole interaction formed? Say, for example, we are having hydrogen fluoride, in which one of the partners, that is fluorine or fluoride, is the world's most electronegative element. So it will pull electrons from hydrogen, due to which what is going to happen is because the electrons are being pulled towards hydrogen, there is unequal sharing of electrons, and because of unequal sharing of electrons, fluorine becomes delta negative, right? Fluorine becomes delta negative, and obviously hydrogen will become delta positive. So like hydrogen is slightly delta positive, that means it is having slight electron deficiency, and fluorine is delta negative, slightly you can say negative in charge. Okay, slight, delta meaning slight or partial. Okay, so charged molecule is a polar molecule. This is one dipole molecule, and the bond formed is a polar covalent bond. We had seen this in chemical bonding, polar covalent bond. So now this HF molecule, one HF molecule will attract another HF molecule. Okay, you can see over here, one HF molecule is attracting another HF molecule. It will attract another HF molecule because H is delta positive, F is delta negative. This H is delta positive. So delta negative F and delta positive H will attract each other. Unlike charges attract each other. So HF के बीच में से long chain बनेगा इनका, and they will show IMFOA, intermolecular forces of attraction, that is dipole-dipole interaction. This is called as dipole-dipole interaction. So hydrogen और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक केमिकल बॉन्ड है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फ्लोरीन मतलब एक HF और दूसरे HF में जो अट्रैक्शन है, that is dipole-dipole interaction. The definition of dipole-dipole interaction will be the electrostatic force of attraction between neighboring molecule having permanent dipole moment. वो dipole moment क्या है सर? Dipole moment is nothing but this difference between the positive and negative charges, that is the dipole moment. Okay, जितना ज्यादा ये positive होगा, जितना ज्यादा negative होगा, उतना greater dipole moment create होगा. So how do we calculate this dipole moment? तो dipole moment का एक formula है, mu is equal to q into L, right? Mu is equal to q into L. That is the dipole moment. Then the dipole-dipole interaction energy, okay, you just have to note this point, energy between stationary polar molecules is proportional to 1 by r cube. Okay, and the dipole-dipole interaction energy between rotating polar molecules is proportional to 1 by r raised to 6, and r is the distance between polar molecules. So come on, quickly answer these simple questions. अब बताओ dipole-dipole interaction is due to, dipole-dipole interaction is due to polar interaction. Okay, then next will be, if higher dipole moment is there, that will indicate what? That they are more polar. Okay, then let's move on to the next part, that is dipole induced dipole interaction. Now what is dipole induced dipole? Now say for example we are having an iron nail, we are keeping in contact with the magnet. So pehle to iron nail was not behaving like a magnet, it had no magnetic lines of force, but because it is in contact with the magnet for a very long time, what will happen? The iron itself will start acting as a magnet. Iron itself will develop the magnetic lines of force. Right, so what happens when a molecule is having non-zero dipole moment comes in contact with molecule with zero dipole moment? मतलब अब जैसे कि मैंने बोला था आपको, आयन जो नॉन मैग्नेटिक था और मैग्नेट उनके कांटेक्ट में आ गया, तो ये नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये पोलर है, इसमें चार्जेस है, तो इसके साथ में ये आयन है या मैग्नेट है, तो मैग्नेटिज्म जैसे आयन नेल में इंड्यूस्ड हो गया था, इंडक्शन हो गया था मैग्नेटिज्म का आयन नेल में, वैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इसके साथ रहने की वजह से पोलैरिटी इसमें इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है, सी ये अपना एक फिलोसॉफिकल बात भी है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो. ठीक है, हमारे ब्रेन में एक इसको साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया विच इज कॉल्ड एज मिरर न्यूरॉन. ठीक है, किसी ने व्हील इन्वेंट किया तो बाकी लोगों ने भी उसको कॉपी कर लिया, मिरर कर लिया. राइट, वैसे ही
जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही आप बन जाओगे, ठीक है। अगर आप फेलियर्स के साथ रहते हो तो आप डेफिनेटली फेलियर बनोगे, अगर आप हाईली सक्सेसफुल और मोटिवेटेड पीपल के साथ रहते हो तो आप वैसे ही बनोगे। सो ये वैसे ही ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये अगर पोलर के साथ रहेगा तो इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कुछ एनिमेशंस के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे अटेंशन। So when they come close to each other, who comes close to each other? The non-polar molecule and the dipole molecule. So this is surrounded by electron cloud. Then this positive charge of the dipole will attract these electrons. Okay, they will attract these electrons, and due to which a dipole is generated over here. तो पहले इसमें dipole नहीं था, अब dipole generate हो गया, तो dipole has been induced, dipole character has been induced. अब इनमें जो dipole dipole interaction होगा वो पहले जैसा है, dipole dipole interaction, बट इसमें dipole character induced किया गया है, इंडक्शन हुआ है उसका, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, यहां पर भी आप देख रहे हो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इट इज बिकम, देखो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाता है और इट आल्सो बिकम्स व्हाट, पोलर और डाइपोल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखना, NH3 विच इज पोलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद नॉन पोलर बेंजीन, सो बेंजीन भी क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है। अमोनिया एंड बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। Okay, come on, quickly answer these questions. The dipole induced dipole interaction energy is proportional to 1 by r raised to 6. Okay, then dipole induced dipole interaction occurs due to interaction between, बोलो, interaction between non-zero dipole, नहीं zero dipole नहीं, non, हाँ ये ना, non-zero dipole and zero dipole moment. Okay, that is the answer. Then अब हम लोग देख रहे हैं आयन डाइपोल। सो आयन डाइपोल में आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक सी, अगर आप आपका घर छोड़ के कहीं आप होटल में रहने जाते हो, मतलब सी फॉर एग्जांपल पुणे से आप मुंबई जाते हो, मुंबई में आपका घर नहीं है, आप किसी रिलेटिव के पास भी नहीं रह रहे हो, तो आप एक ऐसा ऐसा होटल चूज करोगे जहां पर आपको आपके घर के जैसा कंफर्ट मिले। अगर आपके घर के जैसा कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो आप उधर नहीं रहोगे, राइट। अगर आप फुटपाथ पे थोड़ी सोने वाले हो, है ना। तो आयन डाइपोल, ओके, सो एक मॉलिक्यूल, एक आयोनिक मॉलिक्यूल, एक NaCl, वो पानी में तब डिसॉल्व होगा जब उसको उसके घर के जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, जस्ट चेक। या वी आर हैविंग Na प्लस Cl माइनस, या NaCl क्या हो गया, वाटर में डाल दिया, डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन होने के बाद में Na प्लस एंड Cl माइनस मिल गया। Na प्लस इज द कैटायन, ऑफ कोर्स, Cl माइनस इज द अनायन। Then we are having this Na plus and Cl minus molecules in the what, water. Now water makes such a arrangement, ठीक है, कि वाटर में भी दो चार्जेस है, राइट, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस है वाटर में भी। तो वाटर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि ये जो Na प्लस है, Na प्लस को अपने घर का एनवायरनमेंट मिल जाए, यानी कि ये Na प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन लटाइज देखते हो तो इसमें Na प्लस Cl माइनस ऐसा है, मतलब प्लस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव के प्लस के चारों तरफ नेगेटिव और नेगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव। अगर आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये जो प्लस है दिख रहा है क्या, ये जो प्लस है इसके चारों तरफ कौन है, नेगेटिव, और ये जो माइनस है, ये माइनस के चारों तरफ कौन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो प्लस को किसके साथ रहने की आदत है, प्लस को आदत है नेगेटिव के साथ रहने की। तो वाटर क्या करेगा, वाटर इसको नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। सर नेगेटिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, वाटर इज H2O and H2O is also a polar molecule. Water is a polar solvent because this is having delta positive delta negative. Oxygen is the world's second most electronegative element, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हो जाएंगे और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ड्यू टू विच, बोलो क्या होगा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, चारों तीन सब तरफ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से सोडियम को अपने घर का एनवायरमेंट, सोडियम को जो आदत थी नेगेटिव के साथ रहने की, वही नेगेटिव के साथ में रह रहा है सोडियम भी। तो दिस इज आयन, हु इज द आयन, सोडियम इज द आयन एंड इट इज स्टेइंग विद व्हाट, डाइपोल। सो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली we'll also be having Cl minus surrounded by water molecules, right, but वो water molecules उल्टे होंगे, यानी कि Cl minus अगर बीच में है, ओके, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे एंड ऑक्सीजन दूसरी तरफ से आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट वाटर इज अरेंजिंग इटसेल्फ सो दैट द क्लोरीन गेट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव, उसको पॉजिटिव के साथ रहने की आदत है। तो सब तरफ से क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, किसकी तरफ, Cl की तरफ, डेल्टा पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन क्या है, डेल्टा नेगेटिव। सो आयन डाइपोल, ओके, आयन डाइपोल इंटरेक्शन।
I hope you have understood ion dipole interaction, dipole induced dipole interaction, or dipole dipole interaction.